So hello everyone, आप सबको ये तो पता है my journey to Microsoft, and you might know that how my resume personally got filtered for companies like Facebook, Microsoft, Google, and also some other top companies like Walmart, Airbnb, DoorDash as well. पर आपको ये नहीं पता what it took for me to transform my resume from first year in college टू द लेवल आई एम राइट नाउ. तो मैं आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी पे लेके जाने वाला हूँ फ्रॉम माई रेज्यूमे व्हेन आई एंटर्ड कॉलेज इन फर्स्ट ईयर टू दिस पॉइंट. मैंने काफ़ी गलतियाँ की अपने रेज्यूमे में, किस कारण इट डिड नॉट गेट फिल्टर्ड इन द ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ रेज्यूमे जिसमें आपका रेज्यूमे फिल्टर आउट हो जाता है. एंड वॉट इज यूनिक इन माई रेज्यूमे राइट नाउ दैट इट इज गेटिंग फिल्टर्ड एवरीवेयर. So let's get started, and in this video I'm going to share some of the amazing templates as well, and मैं आपको खुद एक template बना के भी दूंगा. So stay tuned and let's get started. तो start करते हैं from this resume. This is my resume from 2016 जब मैं college enter किया था. This resume has nothing special. ये first semester की बात था. At the time my GPA was 3.93 और उसके अलावा मेरे पास कोई प्रोग्रामिंग स्किल्स नहीं थी एक्सेप्ट जावा विच आई लर्नड इन माई हाई स्कूल 11th-12th में. जब हम कंप्यूटर साइंस लेते हैं उस टाइम की जावा मेरे पास थी, एंड आई हैड नथिंग टू शो, नो प्रोजेक्ट्स, नथिंग स्पेशल. एक आधा प्रोजेक्ट था एंड दैट आई कुड ऑल्सो नॉट डिस्क्राइब. आई हैड जीरो स्किल्स हाउ टू डिस्क्राइब. तो बहुत लिमिटेड चीज़ें मुझे आती थी, एंड आई जस्ट हैड वन अवार्ड कि मुझे 12th क्लास में आई वॉज हाई स्कूल वेब डेवलपमेंट कॉम्पिटिशन विच वॉज जस्ट HTML CSS विच वॉज वेरी वेरी ईजी. सो दैट्स वाई आई कुड विन अमंग 9th to 12th क्लास स्टूडेंट्स. तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ये रेज्यूमे बनाया था. फर्स्ट सेमेस्टर में तो कुछ भी नहीं था, बट आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर आई एडेड सम वॉलंटरी एक्सपीरियंस. बहुत खाली रेज्यूमे था. आई हैड नथिंग टू पुट इन माई रेज्यूमे. सो ये है लेवल 1 रेज्यूमे जो आप बना सकते हो व्हेन यू हैव नथिंग टू शो इन रेज्यूमे. आप चाहो तो वॉलंटरी एक्सपीरियंस डाल सकते हो, बट आई विल से ट्राई टू ऐड प्रोजेक्ट्स. और मैंने कंप्यूटर साइंस प्रोजेक्ट्स पे अच्छे से नहीं डाले थे. सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस रेज्यूमे, एंड हम सारी फिक्स करने वाले हैं इन the second year of college resume. So this is the resume of Hadoor Singh as a second year student in college. और इस टाइम पे मैंने first internship कर ली थी. So my first internship was at Panasonic Automotive and my description is here. But ये resume Panasonic में filter होने के लिए I did some changes. तो मैंने इस resume को like बनाने के लिए before the second year I had these awards in the first year itself. तो अगर आप इस resume के देख रहे हो, you can just delete this part. तो ये बेसिकली फर्स्ट ईयर रेज्यूमे बन जाएगा बिकॉज दिस इज हाउ आई अप्लाइड फॉर माई फर्स्ट इंटर्नशिप. तो अब इसे ब्रेक डाउन करते हैं हाउ आई गॉट माई फर्स्ट इंटर्नशिप इन माई फर्स्ट ईयर. सबसे पहले इन माई फर्स्ट ईयर इटसेल्फ मैंने हैकाथॉन में कम्पीट किया. मैंने उसे अवार्ड्स में डाला. मेरे पास प्रोजेक्ट्स नहीं थे इन दिस होल रेज्यूमे. इफ यू ट्राई टू सी देयर इज zero projects, but this award was itself a project क्योंकि मैंने इस project में in a team of 4 people in this hackathon I competed. तो हमने क्या किया था, एक Amazon Alexa को लिया. We tried to use Amazon's API. API is something जो आपके लिए काम कर देता है without you learning how to do it. For example, आपको scratch से AI बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है for Amazon Alexa. आपको ना कि उसमें voice recognition डालनी है, ना कि आपको इसमें microphone डालना है. Everything is ready for you through Amazon API. Another example could be जो टेस्ला में मैप्स है, उन मैप्स टेस्ला ने खुद नहीं बनाया. इट इज़ फ्रॉम गूगल मैप्स API जो टेस्ला में ऊबर एप्स में आपको दिखता है. सो सिमिलरली वी यूज Amazon API टू इंटरेक्ट, और ये सिंपल प्रोजेक्ट था जो मैंने बनाया. एंड अदर देन दैट मेरे पास 2 हैकाथॉन्स थे विच हेल्प मी गेट द फर्स्ट इंटर्नशिप एट पैनासोनिक ऑटोमोटिव. तो वो भी फर्स्ट ईयर में था. तो ये देखोगे दिस इज मार्च ऑफ 2017 और मैंने इंटर्नशिप की थी May of 2017. तो 2 महीने पहले ही सारी चीज़ें अच्छी हुई थी. दिस इज ऑल्सो मार्च ऑफ 2017. सो ये सारी चीज़ें मैंने अपने फर्स्ट ईयर रेज्यूमे में डाली. एंड देयर वर सम मैथ कॉम्पिटिशन्स आई कम्पीटेड सिंस 2016. मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली आई जस्ट डाइव्ड इनटू इट एंड ट्राइड माय बेस्ट. कुछ भी हो जाए अपनी स्किल्स प्रूव करके दिखाऊंगा. जो भी कंपटीशन आते थे, दीज आर जस्ट एन एग्जांपल ऑफ 4 अवार्ड्स दैट आई एडेड. पर मैंने इससे ज़्यादा अटेंड किए थे. ऑब्वियसली जो भी अपॉर्चुनिटी मिली आई ग्रैब्ड इट एंड आई एडेड. नाउ दीज आर एक्स्ट्रा करिकुलर्स जिसमें मैंने 2 और प्रोजेक्ट्स डाले, बट एक्चुअली दिस शुड हैव बीन प्रोजेक्ट्स as compared to extracurriculars. The first is project जो हमने बनाया था at a different hackathon जहाँ पे award नहीं मिला, but this is
एक्चुअली जस्ट एक्स्ट्रा करिकुलर, सो आई चेंज इट टू एक्स्ट्रा करिकुलर, बट आप इसे प्रोजेक्ट्स का नाम भी दे सकते हो. एंड आई स्टिल केप्ट द वॉलंटियर एक्सपीरियंस फ्रॉम माई फर्स्ट रिज्यूमे, जिसकी ज़रूरत नहीं थी. एंड दीज आर द स्किल्स. बेसिकली मुझे एंड्रॉयड आती थी एंड आई रेटेड इट बाय माई सेल्फ 1 to 5, जो कि देना नहीं चाहिए. यू डोंट नीड इट. मुझे किसी ने बताया था कि इट्स अ गुड आइडिया टू रेट इट, बट इट्स नॉट अ गुड आइडिया. अगर अभी मैं स्किल्स डालना चाहूँ, आई विल रादर से प्रोफिशिएंट, जिसमें मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, एंड देन डू नॉट ऐड एनी टाइटल टू इट, ताकि इंटरव्यूअर को पता चल जाए कि या आई एम सेइंग दैट आई हैव मोस्ट एक्सपीरियंस इन जावा, बट आई हैव एक्सपीरियंस इन अदर थिंग्स एज वेल, पर जावा में सबसे ज़्यादा. इफ़ यू वांट टू प्रूव, ये सारे टेबल्स या फिर रेटिंग्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. इफ़ आई हैव टू जज माई सेकेंड ईयर रेज्यूमे या फिर रेज्यूमे जस्ट बिफोर अप्लाइंग टू पैनासोनिक इन माई फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, आप कुछ भी समझ सकते हो क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन है. सो नाउ अनदर थिंग इज एक्सपीरियंस, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स के पास नहीं होता. आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज अ मैथ ट्यूटर, जो कि आप भी ले सकते हो. सो यू कैन डू फ्रीलांसिंग, यू कैन एक्चुअली लिटरली बिकम अ चेक ट्यूटर. चेक पे आप ट्यूटर बन सकते हो. यू कैन डू फ्रीलांसिंग ऑन फाइवर, अपवर्क, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आप कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हो. एंड इट इज़ एन एक्सपीरियंस इटसेल्फ, जो कि आप ऐड कर सकते हो एज अ फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट, जो आपके रेज्यूमे को काफी ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं. बाय द वे, टॉकिंग अबाउट रेज्यूमेज, इट रिमाइंड्स मी ऑफ सिलिकॉन वैली, वेयर आई एम राइट नाउ, बिकॉज आई हैव सीन द मोस्ट competitive resumes here, with thanks to most competitive internships done by students. But irrespective of wherever you do your internship, it is important to keep your data secure on your work or on your personal devices, which you can easily do thanks to my favorite VPN called Surfshark. Because with Surfshark VPN, you not only keep your data secure, but also you can use it on unlimited devices, on your friends, family devices, including your iPad, personal devices. And my favorite feature of this VPN is that I can unblock stuff on Netflix, Amazon Prime, because for example, Friends is not available on Netflix in the US, but it is available in UK. I can change country to UK and get it in the US as well. And number 3, my favorite feature is for booking flights. If I am going to a country in South America, I can change the VPN to South American country and book from there by using a VPN and get a cheaper flight. So what are you waiting for? Use my link in the description below to get 83% off plus 3 months free of this VPN. So definitely check it out. My code is SINGANYUS. Now let's move on to third year student resume of Harnoor Singh. Now here comes the third year resume and there are some changes. So after using my previous resume, मैं NCR के लिए apply कर पाया. That was also through hackathon. I got internship at NCR and मैंने research position में try किया. I just tried to get into research in my second, or you can say second year of college or before third year. मैंने research की भी कोशिश की. So that was literally right after my Panasonic internship. और मैंने सारी timelines यहाँ पे add की हुई हैं. And अगर आप ये पूरा font देखोगे, you don't have to use a double column resume. ये actually double column resume. You don't really have to. मैं double column इस कारण use करता था because I wanted to show that I have done a lot more stuff as compared to normal student. मैं कुछ extraordinary prove करना चाहता था. And अगर आप इसमें ये भी देखो, जो मैंने फॉन्ट चूज किया है, आई हैव एक्चुअली केप्ट जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी, आई हैव केप्ट NCR, Panasonic, bolds and more clear as compared to experience या फिर awards. काफ़ी रिज्यूमे जो मैं देखता हूँ, इसमें experience ज़्यादा बड़ा या bold होता है, awards का सेक्शन ज़्यादा बड़ा या bold होता है. I personally try to enlarge the brand value. मेरे रिज्यूमे में ब्रांड वैल्यू कहाँ से आती है? Panasonic, NCR and दिस एक्सपीरियंस. तो इसको मैं ज़्यादा बोल्ड कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स. और अगर आप भी अपना अगर टेम्पलेट स्टार्ट करते हो, सो लेट्स से दैट आई गिव यू अ गूगल डॉक टेम्पलेट. सो दिस इज शिकागो स्टाइल गूगल रेज्यूमे टेम्पलेट, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इन गूगल डॉक्स. एंड देयर इज अ ह्यूज मिस्टेक इन दिस टेम्पलेट. बेसिकली अगर आप देखोगे, कंपनी का नाम, कंपनी नेम एंड द एक्सपीरियंस बोथ आर इन बोल्ड्स. But if I have to change an existing template, which is a single column, अगर आप use करते हो, how I will do it? So first thing I'll do is I'll make this not bold, and आप इसका size बड़ा कर सकते हो. You can make it bigger, but not bold because I want to focus it on the company name. I'll also try to increase the size of company name, and this is the value your resume has, that you worked at Wells Fargo, एक बैंक है जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ है, और SunTrust. तो इन चीज़ों को मैं ज़्यादा बोल्ड रखूँगा. and there is other things such as August 2022 present. तो इसकी वैल्यू बहुत कम है. when I'm going through resume top to bottom, मुझे ज़्यादा चीज़ें clear दिखनी चाहिए. so date is not that important. I can even change the color. so you can change the color of this to gray, ताकि ये थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया. so you can change the dark gray so that you're not deviated. you're looking at the location, company name. तो आपका ध्यान
ब्रांड पे ज़्यादा जा रहा है, दैट यू वर्क एट Amazon, Google, सो योर फोकस इज राइट देयर. तो मैं ऐसे ऐसे चेंज कर सकता हूँ सो दैट यूर कीपिंग द ब्रांड वैल्यू ऑफ द रिज्यूमे हाई. और इसी तरीके से आप एजुकेशन में, यहाँ पर एजुकेशन में यू कैन कीप द फॉर्मेट लाइक दिस. सो मैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर यूज करके आई चेंज द एजुकेशन लाइक दिस, एंड Wells Fargo की तरह I'll paste the format for Louisiana State University. It could be same for projects, etc. That you're keeping the brand of your awards, projects कहाँ पे किया high. So similarly मैंने same चीज़ें अपने थर्ड ईयर वाले रिज्यूमे में भी की. मैंने आई हाईलाइटेड द यूनिवर्सिटी, आई एम हाईलाइटिंग द अवार्ड, सो दिस इज इन बोल्ड्स, ऑल द अवार्ड्स आर इन बोल्ड्स, ऑल द प्रोजेक्ट्स आर इन बोल्ड्स, ताकि ब्रांड वैल्यू, एंड व्हेन यू गो थ्रू दिस रिज्यूमे फ्रॉम टॉप टू बॉटम यू कैन ईजिली सी कि हाँ इस बंदे ने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं, एंड यहाँ पर सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आर इन बोल्ड्स एंड क्लियर. नाउ अनदर चेंज दैट आई डिड इन माई रिज्यूमे वॉज जस्ट लाइक आपने पहले रिज्यूमे में देखा, मैंने अपने स्किल्स को rather than giving a rating 1 to 5, I just added all of them in bullet points on the side. And जो चीज़ें application tracking system में ज़रूरी है, so these are the things that are important, such as Android development. मैंने इसमें Android development नहीं डाली, I forgot about that. Actually I have added, so if you see that I have added Android skill in technologies, so these are the keywords which are important when you submit your resume online. So Android, these functional programming, machine learning, these are the things that get filtered and that help you. तो ये keyword and concepts एंड टेक्नोलॉजीज की चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको डालनी चाहिए सो दैट योर रेज्यूमे गेट्स फिल्टर्ड. बट इस रेज्यूमे में अभी भी काफ़ी ज़्यादा कमी है. सो फॉर एग्जांपल लाइक व्हेन आई वाज डिस्क्राइबिंग माय प्रोजेक्ट्स, तो मैंने आपको कुछ प्रोजेक्ट्स तो आपको मैंने डिस्क्राइब किए, एंड सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो मैंने आपको डिस्क्राइब किए आर एक्चुअली इन माई कोर्स एज वेल, singuniversity.com. अगर आपने वो एक्सपीरियंस किया, मैंने आपको और इन डेप्थ dive किया है into my projects and how I made them. When I go through the project section, I can easily find out that this project is in Java, but I don't know what it does. So ये चीज़ें मैंने next resume में fix की हैं, that when you read the title, you can figure out कि what this is as compared to reading the description. हर project की मैंने एक line description डाली है, मान लिया, but if I want to read it quickly, this title doesn't tell me anything. तो इस कारण इंपॉर्टेंट है इस पे थोड़ी सी 2-3 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन भी डाल दो, विच मेक्स इट मोर क्लियर व्हाट इट प्रोजेक्ट डज. वो आपको मैं लास्ट वाले रिज्यूमे में ज़रूर दिखाऊंगा. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट अदर एक्सपीरियंस पार्ट ऑफ दिस रिज्यूमे, मैंने हर अपॉर्चुनिटी जो भी मुझे यूनिवर्सिटी ने दी, मैंने एक एक ट्राई की जो मुझे बेस्ट लगी एंड रिलेटेड लगी टुवर्ड्स कंप्यूटर साइंस. आई एडेड. आई इवन वर्कड एट डाइनिंग हॉल. आई डिडंट ऐड दैट, राइट, वो रिलेटेड नहीं था. एट द टाइम आई हैड ओनली 3000 सब्सक्राइबर्स. मैं चाहता तो इसे मैं टॉप पे डाल सकता था, बट यूट्यूब इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, सो ये चीज़ें साइड पे होनी चाहिए. आई वॉज नॉट अ लीडर फॉर ACM मेंबर, पर फिर भी मैंने एक्टिव ACM मेंबर डाल दिया, या फिर एक्टिव कंप्यूटर साइंस क्लब मेंबर, बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो दैट आई एम नॉट जस्ट अ रोबोट जो कोड करता है, मैं बाकी चीज़ें भी करता हूँ. आई एम ऑल्सो हेल्पिंग अदर पीपल्स इन द क्लब ग्रो. तो ये चीज़ें आपके रिज्यूमे को ज़्यादा वैल्यू डालती है, दैट यू आर नॉट अ रोबोट. यू कैन ऑल्सो ऐड दैट यू वर्क आउट एज वेल इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स, बट आई वॉन्टेड टू कीप इट फोकस्ड टुवर्ड्स कंप्यूटर साइंस, एंड एट द सेम टाइम शो कि मैं कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड पढ़ाई के अलावा काफ़ी चीज़ें कर सकता हूँ, सच एज मैथ कॉम्पिटिशन्स जो मैंने बैक टू बैक, लाइक इट समहाउ लाइक लास्ट ईयर को छोड़कर मैं हर कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आ ही गया, इन अ टीम और इंडिपेंडेंटली वी वर एबल टू, बिकॉज मैंने JEE की मैथ पढ़ी हुई थी. सो दीज मैथ कॉम्पिटिशन्स वर ईजियर देन JEE इटसेल्फ, तो ये काफ़ी ईजी हो गया था हमारे लिए. एंड टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजीज, तो टेक्नोलॉजीज में जो आप लाइब्रेरीज यूज़ करते हो इन एंड्रॉयड में काफ़ी ज़्यादा फ्रेमवर्क्स होते हैं, या फिर अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा फ्रेमवर्क्स होते हैं, सच एज रिएक्ट, एंगुलर, these kind of frameworks वो आप टेक्नोलॉजीज में डाल सकते हो, so that your resume gets filtered properly. Now let's move on to the final year resume of Harnoor Singh. Actually this is the resume after 1 year of my graduation, जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, because of which I was able to get filtered at every company I applied to. I always got interviewed. जो भी कंपनी का आप नाम ले लो, even if it's Apple, Google, I was always given the opportunity to interview. So this is the life changing resume of Harnoor Singh. तो इससे पहले I want to thank Nick. So 2 years ago he actually reviewed my resume live on our YouTube channel. तो उसके कारण मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपने resume में डाल भी पाया. So first of all, this resume is single column.
I don't think it makes a difference, two column or single column, but I think when you scan it from top to bottom, इसमें सारी चीजें concise थी मेरे लिए, so I think it was better for me to choose single column क्योंकि मुझे लग रहा था कि double column is bit overwhelming. मैं ज़्यादा show off करने की कोशिश कर रहा हूँ. Now let's talk about number one experience NCR. So basically based on your internships, वो तो आप एक्सपीरियंस डाल ही दोगे. नाउ आई ऑलवेज ट्राई टू मेंशन द लैंग्वेजेस जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न जो भी था, आई ऑलवेज मेंशन द लैंग्वेजेस दैट आई एम यूजिंग इन द डिस्क्रिप्शन. अगर यहाँ पर मैं नहीं डालता देन आई कैन एड इट हियर जस्ट लाइक माई प्रोजेक्ट्स. अगर आप मेरे प्रोजेक्ट्स देख रहे हो, आई हैव एडेड इन द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ, तो मैं यहाँ या तो यहाँ पर डाल दूंगा इन द फर्स्ट लाइन और somewhere here it should be visible. Same at Panasonic, जो भी languages थी मैंने सारी यहाँ पर description में डाल दी. For यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी because it was just an Android app, so I just mentioned it here itself. But if you have more than one skill, you can add it here just like my project section. Another important change जो मैंने किया in my resume, तो अगर आप देखोगे हर project के नाम के बाद there's a description. So Microsoft Percept project or Microsoft Percept challenge at NCR Global Hackathon, it is about online ordering. So थोड़ा सा hint मिल जाता है to the reader that this project is about online ordering. Some description should be there in the project title. Same as here, every project has something that makes the reader excite. Oh, this is OCR for gas prices, this is scan and go ordering, this is teaching CS with music, and this is medicine solution for elders. So every project you can immediately find out what this project does in the first line itself. If I want to know more, I can read the description. So everything is clear. And in fact, the programming languages that I've used in each of my project is also clear, that I can read immediately and figure out that this guy is definitely stronger with Java and Kotlin as compared to any other languages. So you can easily figure out and tell. And other thing was I have awards. So basically parallel to the projects, I have date by date mentioned the awards I have, and total awards are 10 plus. I added because there was no space to add 10 projects, and I thought showing 10 projects is a show off. So I was like, let's just try 10 plus. Now actually it's 12 plus at this point. So I just tried 10 plus because 10 is a good number to show off. And I showed my 5 best awards that I think are good enough for this resume. For example, at Hack GT, and some awards that I got at non-popular hackathons या फिर some math competitions. I'm not showing off here. मैंने क्योंकि यहाँ पर number से, through this number I'm clarifying that there are more awards than these. If you want to ask, please feel free to ask and I will be happy to tell you. Another transforming update कि मैंने जो skills है, so skills are in very concise manner in 3 lines. Before in double column it was actually more difficult to read as compared to now, because they are in single line. I can easily read Java, RX Java, and then Kotlin, Python, and it's easier. But here it's like you have to go multiple lines, so थोड़ा सा difficult लग सकता है because when you're reading you go to the next column. So इस कारण मुझे लगता है that this is better for reading point of view. Going top to bottom in this resume is faster. आप 6 seconds में read कर सकते हो all the bolds. So this is bold, 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 bold. Another important thing is मैंने काफी projects, most of the projects are clickable. If I click on this CS Music, it takes me immediately to the GitHub code of this project where someone can read how to. I haven't given a readme how to install it because it's just an Android app. It's a straightforward process. आप readme में description डाल सकते हो of this project, but every link is clickable. You can go from project to the source code so that someone can figure out कि मैंने genuinely खुद मेहनत से, चाहे it's team effort or it's alone, that I have worked on it. काफी projects में team है. All the hackathon projects are in a team of 3-4 people. For example, I've specified ये teamwork है, team of 5. I try my best to share that it's in a team of 5. It's never me. It's the team which is helping us do the project. So हमेशा be honest and try to mention कि आपने अकेले नहीं किया, because otherwise the other person can assume that you're doing it all alone. Try to mention it everywhere. I haven't mentioned everywhere, but please mention it 1 to 2 projects that you're doing in a team. तो ऐसे honesty से you are making it clear that ये resume में honesty है and it's easier to go through. अब इसमें मैंने बाकी extra curriculars नहीं mention किए. For example, I'm part of ACF club, computer science club. I didn't have space for it because this is for full-time positions.
और आई थॉट कि अगर किसी इंटरव्यू को मेरे में इंटरेस्ट होगा दे कैन जस्ट आस्क, सो आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस रिज्यूमे ओनली टेक्निकल. अगर आप एक सीवी बना रहे हो, सीवी इज अ रिज्यूमे विच इज लॉन्गर देन 1 पेज. एक रिज्यूमे 1 पेज ही होना चाहिए. अगर आप सीवी बना रहे हो उसमें आप डाल सकते हो. इन अ सीवी यू कैन ऐड योर हॉबीज एक्सेट्रा, बट इन यूएस एटलीस्ट आई वॉज नेवर आस्क फॉर अ सीवी. तो मैंने हमेशा इसे टेक्निकल रखा. एंड विद दिस full-fledged resume, I was filtered for application tracking system. So because मैंने सारे keywords डाले थे तो हर कंपनी के ATS से I was able to cross it and I was able to get interviewed. So ये थी मेरी resume की transformation. I think the key takeaways should be हर चीज़ की description clear होनी चाहिए, but more than the resume, your projects matter. अगर आपका resume format is not up to the mark, but your experience, projects are up to the mark, आप फिर भी you can make it to these top companies. And especially अगर आप दोबारा देखो the Google Doc resume, so if you do minor changes to this Google Doc resume, जैसे मैंने आपको बताया, make the companies bold, make the projects bold, just like in my resume, आप अपना खुद का टेम्पलेट बना सकते हो. If you want this template, I'll also link in the description below, and आप हमारे कोर्स से भी चेकआउट कर सकते हो. This template is also in the course जहाँ पे hackathon project अभी हो रहा है. And the biggest factor why I got into Microsoft was मेरे पास Microsoft related project already on the top था. So this makes a huge difference. मैंने अपने कोर्स में भी यही बात की थी. When you're doing open source projects, company specific, for the company you're applying to, काफी difference हो सकता है. And this was a project for the company I was applying to, and the interviewer immediately figured out that I am passionate for Microsoft immediately. और ये सारी चीज़ें हमने कोर्स में ओपन सोर्स प्रोजेक्ट अगर आप चेकआउट करोगे इन डिटेल, आई हैव मेंशन्ड हाउ टू मेक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स फॉर दीज टॉप कंपनीज. आप वो चेकआउट कर सकते हो. बट इफ यू डोंट हैव टाइम टू चेकआउट द कोर्स, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो हाउ टू मेक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट फॉर दीज कंपनीज, एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट हाउ टू डू दैट टू. सो दैट विल बी इट. एंड माई फाइनल टिप विल बी, आप जिस भी कंपनी के लिए अप्लाई करो, विच एवर कंपनी यू अप्लाइंग फॉर, योर पैशन फॉर दैट company does make a difference in you filtering out. If I'm applying for Google, I will definitely mention a Google open source project on the top, just like I mentioned Microsoft. So that will be it. Thank you so much for watching. I hope it was helpful, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.